This is the talk. We are going to start a series on AI. As I know, AI is going to be the champion of this. And India knows how to use AI. India knows so many things. India means मैं आपकी बात. Those who are using computer, those who are working on computer, they think that they are using AI, but they don't know what are the possibilities which is available with using AI. I, as a CA, ask you to join this session, 10 session free. Free matlab I'm charging 6,000 for your commitment to join this course. But once you finish this course, I assure you, you would be quite different. Your capability would be different. Your ability to deliver is different. I'm not an expert, but SHAILESH has done a number of courses. And what he's going to teach you, I'm going to talk about that. How one of the slides which I've deliberated in detail, but you will be able to understand once I'm giving you concept clarity. What is the concept of using AI? Which is the contextual I'm giving you. Once you will understand, we have got 2 into 10, 20 hours this course, which will be available on Zoom. You can join through Zoom and you can join through physical, which is available in Ahmedabad and Mondial. You go through the blog. You in blog here, there's a Google form. You fill up the Google form. There is the course material available with me. And what are the course? This 2 days presentation is also available. On the basis of that, you will be able to conclude why you should join the course. Though using AI, but you will be different way of using AI. With this, I'm going to give you a different perspective of how to use it. With this, I'm again asking a different course, which is also coming in the way. I'm not going to discuss much about that, but investment strategy, I'm going to try to take similar kind of talk. Why you should join investment strategy class, which is going to be conducted by Bombay Kantharia. One of my PPT on how to invest in share market is I'm going to put it in my blog, which you can go through it. भौमिक के लिए मैं एक अलग पूरा बोल लूंगा एक्सप्रेशन जैसे एआई में क्यों ज्वाइन करना इस तरह से मैं वो भी लूंगा. आई एम सी नितिन पाठक. माय ब्लॉग इज देयर. आवर नंबर ऑफ यू प्रेजेंटेशन इज देयर. आपको एआई के कोर्स में ज्वाइन होना है, आपको इन्वेस्टमेंट में कोर्स में ज्वाइन होना है, ब्लॉग में जाओ, गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म भरोगे, बाद में आपको पेमेंट लिंक में भेजूंगा, देन यू कैन ज्वाइन थ्रू इट. व्हाट आई एम गोइंग टू कंडक्ट, मैं एक जीएस हमारे यहाँ जनरली एक वीकली फ्री सेमिनार होता है जिसमें इस बार मैं जीएसटी के बारे में बोलूंगा. And then again, work-life balance. What is work-life balance structure? Is work-life balance structure in your mind? I'll talk about that on 14th. Right now, this is not a subject. There are different kind of subjects: business strategy, investment strategy, work-life balance, everything. And used by Bhavesh Poklani. He has said that I will try to come, and rest is confirmed to come. We are hiring a CMS article. I'm not going to talk. This is SHAILESH is going to talk much about AI training empower use of this. This is his slides presentation which I'm sharing with you. This is what he has shared with you. This PPT will be available on blog, and I'm going to talk about, there are 9 modules which are going to read. Foundation of AI and prompt engineering. What is prompt? Usually we are doing a prompt and this thing. I'm going to talk about how to prompt AI and how to have a different available tool. Some are free, some are chargeable, which are presented here also, and many more to come. This is just a presentation which we have prepared now. And but over a period of 20 sessions, you will be quite different on the basis of what we are going to conduct. Okay. Now I'm going to talk about module 1. Understanding what is LLM. LLM is a database on which is comprehensive training curriculum. This is, but what is one which I'm going to talk is about understanding LLM as a prediction.
There are different production modules, and module is based on input, process, and output. Each process has a different way, and there are each modules are available in a different way. Once you will understand where to use AI, also is a very important. How to use, where to use. Once you use this understanding LLM prediction, zero shot, one shot, few shot, COT, chain of thought, and step back, output configuration optimization, best practice reliable, creative effective instruction, system contextual and role prompting, self-consistency and reactive model. These are the few things I've discussed here, which you will be able to understand why you need to join the curriculum. आपको लगता है मुझे आता है, but आप जैसे ये 20 सेशन लोगे, you'll be quite different by experience. साइकिल चलाना और साइकिल चलाना आता है, but when you go to a class, your class of cycle चलाना बहुत different होगा. This is what I'm saying. Understanding LLM as a prediction. Understanding LLM as a prediction means viewing them as a sophisticated probability engine that gives the next word. जब आप गूगल में जाते हो, गूगल में टेक्स्ट लिखते हो, तो आपको बाजू में आपका टेक्स्ट आ जाता है कौन सी आप यूज करने वाला हो. इट्स कॉल्ड LLM मॉडल. वो का आपका बिहेवियर प्रेडिक्शन करता है, आप आगे क्या लिखने वाले हो. आई एम गोइंग टू दी टास्क, तो आपको वो जवाब तैयार करके देता है. व्हेन यू गो टू गूगल, आपका जवाब भी नीचे, जैसे जीमेल खोलते हो आपको जवाब का ऑप्शन भी आ जाता है. दिस इज कॉल्ड LLM prediction. They use the token tag on the basis of this next token prediction, allow them to learn a complex pattern of enabling this diverse capability. This is just not a prompt. Beyond prompt. Prompt पे पहले वो आया. Prompt is the next step. Now I'm going to talk zero shot, one shot, two shot. What do I mean by zero shot? Zero shot prompting is a technique in which large LLM perform tasks based solely on a prompt without being given any example. जैसे मैं बोलता हूँ तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे कुछ चाहिए, तो मैं उसको बोलता हूँ दिस इज माय इनपुट, दिस इज माय आउटपुट एंड दिस इज माय प्रोसीजर. इट इज नॉट लाइक दैट. अब जैसे लिखता हूँ prompt entire relies entirely on the pre-trained knowledge to understand the instruction and generate a relevant response, making it suitable to general purpose tasks like summarization, translation, sentiment analysis. It's a quick method, but तुम फटाफट आ जाते हैं. बट एक्यूरेसी इज अनप्रेडिक्टेबल. आपका वो पता नहीं चलेगा. मोर कॉम्प्लेक्स था बिकॉज इट रिलाइज ऑन मॉडल्स जनरल. आपको जो चाहिए वो जनरल करके देता है, बट नोट इसको इसको क्या बोलते हैं, जीरो शॉट. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन शॉट. व्हाट इज वन शॉट प्रॉम्प्टिंग? It's a technique where a language model is given single example to understand a complete task. अब मैं बोलता हूँ कि मुझे 5 + 5 10 चाहिए. अब आप 6 5 10 जितना भी लिखो उसका सम करके देगा. अब आप 5 × 5 करके दोगे मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई करके देगा. आप इसको किसी भी तरह वो कॉन्टेक्चुअल मॉडल करोगे, वो आपको कॉन्टेक्चुअल मॉडल करके क्या बोलते हैं, वन शॉट मॉडल. One shot prompting is a technique where language model is given a single example to understand and complete. By providing one example, the prompt guides the model on the desired output style and for leading to a more accurate and less ambiguous result. अब आपने कुछ prompt दिया है, उसको कैसे करना है, क्या चाहिए आपने दिया है, तो जीरो शॉट में आप कुछ देते ही नहीं. It assumes that you want it. In one, you give some clue of what you want, which gives an example. It's less complex. That example is like this. Two-shot prompting is a prompt engineering technique where you provide a language model with a few examples of input-output. A pair to provide how to complete the new task. तो आउटपुट कौन से फॉर्मेट में चाहिए, आपको क्या चाहिए. मैं गिव एन एग्जांपल. एक 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 मॉड्यूल होता है जिसमें हम नाम डालते हैं, उस वो नाम की आउटपुट देता है. फिर आप फादर्स डे बोले तो उसके अंदर फादर्स नेम आएगा. आप एज बोलते हो, पर्सन सेम है बट आउटपुट अलग है. तो वो एक इसको इनपुट आउटपुट बोलते हैं. प्रोसेस इज सेम बट रिजल्ट इज डिफरेंट. इसको इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बोलते हैं. क्लियर? यस नाउ यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन, बट अपने इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के प्रोसेस में काफी चीज डिटेल है.
आप इसको पूछे कि तुम्हारा धर्म क्या है, एज, तो वो आपको वो देगा। पर्सन रिमेन द सेम, बिकॉज आपने आइडेंटिफाई कर दिया। आप अगर आपको प्रॉब्लम में देखोगे, अभी आपने रिसेंटली सुना है रिलायंस के धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट जो बॉम्बे है, इन्होंने एक्सरे, आप डालो कोई भी एक्सरे डालोगे, आपको तुरंत उसका रिजल्ट आएगा कि आपको ये डिसीज है, आपकी ये मेडिसिन है। तो इसको ये मेडिसिन विल बिकम अ वेरी 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 पावरफुल टूल। आपको एमआरआई डालो, उसमें क्या करना होता है, हाउ इट वर्क्स, आई टेल यू इट्स वर्क्स लाइक दिस। आप एक एक्सरे देते हो, ओके, इसका टैगिंग कर, टैगिंग मालूम है? टैगिंग मीन्स आप इसकी ये एक्सरे है तो इसकी वजह से आपका आउटपुट ये है, ये तुम्हारी इनपुट है, ये आउटपुट है। आप इसको पूरा का पूरा 100,000, 2,000, 5,000, 10,000 वो एक्सरे दिया ना, उसको इनपुट आउटपुट पता चलता है ना, ही विल गिव यू, जैसे ही आप एक्सरे रखोगे आउटपुट मॉड्यूल है। तो इट इज कॉल्ड यू गिवन ए टैगिंग, नाउ रिजल्ट विल। जैसे आपका जीएसटी का डेटा है, आप इनपुट आउटपुट डाल दो, सीधा करके आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड फ्यू शॉप प्रॉम्प्टिंग। अब आपको लगता है कि ये मेरी कंपनी में पॉसिबल है, एब्सोल्युटली पॉसिबल। नाउ दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट ए मॉड्यूल, हाई रिस्क। अगर आपको एक्सरे में कुछ गलत हो गया तो रिजल्ट गलत आएगा, पूरे लाइफ एंड डेथ है। बट इट इज नॉट लाइक दैट इन आवर केस। तो इट्स कॉल्ड फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। मैंने आपको एक बताया रोल मॉडल। अभी अब क्या होता है कि चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग आती है टू ब्रेक डाउन। अभी मेरे को एक रिजल्ट चाहिए तो मैं उसको प्रोसेस बोला, पहले तुम एज को डिफरेंट करो, नेम डिफरेंट करो, आपका इनपुट मॉडल अलग करो, आउटपुट जो प्रोसेस इसका रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल, आउटपुट, ये सब इसको चेन ऑफ थॉट में डालो। पहले मैं इसको फाइनेंशियल डेटा सीधा दे देता हूँ, बट नो, आई गिव यू प्रोसेस स्टेप वाइज, ईयर वाइज, प्रोसेस वाइज, इंडस्ट्री वाइज। नाउ मैं क्या बोलता हूँ, पहले इंडस्ट्री अलग कर दो, फिर आप ईयर अलग कर दो, फिर आप इसका प्लेस अलग कर दो। इसको चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, ये टू ब्रेक डाउन ए प्रॉब्लम इन एक्सपीरियंस स्टेप वाइज, लाइक ह्यूमन शोइंग देयर वर्क टू इंप्रूव द एक्यूरेसी। अगर आपने इसको स्टेप वाइज दिया तो चेन ऑफ थॉट वुड बी मोर एक्यूरेट देन जीरो प्रॉम्प्ट, वन प्रॉम्प्ट, इनपुट आउटपुट मॉडल। चेन ऑफ मीन्स वो आपका स्टेप वाइज जाएगा, ओके। बाय प्रॉम्प्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक वेयर ये फर्स्ट जनरेट हाई लेवल एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन। पहले वो क्या करेगा, आपने उसको चेन ऑफ थॉट दिया तो पहले वो इंडस्ट्री वाइज अलग करेगा, फिर उसका करेगा, देन ही विल गिव यू डिफरेंट प्रॉम्प्टिंग। आप एक का एक क्वेश्चन बार बार उसको करोगे। तो ये फर्स्ट जनरेट हाई क्वेश्चन एंड देन यूजिंग द पावर आंसर to that abstract question, the question to solve the original and more specific problem. Together, this method guide AI to first understand the core principle and then reason through the more reliable result. That's consistency. Self consistency में क्या करते हैं, आप एक का एक रिजल्ट डिफरेंट क्वेश्चन पूछ के ला, you are asking the same question in a different way and you're getting a result, then you are using uh, this this method to do this. Self-consistency is a technique that improves the reliability of LLP model leveraging multiple reasoning paths. It operates on the principle of LLM is prompted to answer a question multiple times. The answer that appears most frequently among the diverse reasoning paths generated is likely the correct one. This approach is often using conjunction with chain of thought. अब chain of thought हमने पहले बोला था, और chain of thought मैंने बोला था आगे, अब step wise. Now you are using same with different model. अगर आप, मैंने आपको एक ही मॉड्यूल के बारे में मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, आप 9 मॉड्यूल अटेंड करोगे, आप इसके बाद इसका कंटिन्यूस आपका हमारा ट्रेनिंग करोगे, हम आपको डिफरेंट क्या बोलते हैं, चैट जीपीटी, बोल्ट और ये सबका आपको ऑप्शन देगी। नाउ यू विल बी द चैंपियन ऑफ एआई एंड यू विल बी, मेरे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा क्लाइंट है, ओके, इसका एक ट्रिब्यूनल की अपील थी, इज कम विद ट्रिब्यूनल अपील फाइल perfectly, which many professionals cannot do it. He has given a presentation on it, that including filing. Now, this can be the use of AI, not one by CA, but a technical, non-technical person. So this is the use of AI. We forget, just 10 दिन और 15 दिन ऑफिस छोड़ दो, 20 दिन ऑफिस छोड़ दो, AI को लर्न करो, how to use it, invest your money there, and then you will be a different person. But
But what happens? You go to a different person who doesn't know much about the how to use AI. He has never used AI. वो खुद ऑफिस में काम नहीं करते, जो लेक्चर देते हैं ना बाजू बाजू में, जो प्रैक्टिकल यूज नहीं करते उसका लेक्चर कोई काम का नहीं है। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो, बराबर है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने वाला जैसे वो होता है, वो जाके इलेक्शन नहीं जीत सकते, जाके तुमको ग्राउंड लेवल पे वर्क करना पड़ता है। तो जो आदमी ने, जो इंसान आर्टिकलशिप की है, अप्रेंटिसशिप की है, कोई काम किया है, नाउ ही इज गोइंग टू यूज एआई, miracle would happen, I guess, surely. Okay? With this, I'm going a chain of thought. And by generating several theories and selecting most consistent answers, self-conscious reduce likelihood of error from a single potentially flawed reasoning path. I'm doing self-consistency and great framework. मैं फिर से बताता हूँ what is that. Self-consistency is a technique that improves the reliability of LLM output by delivering multiple reasoning paths. एक ही काम है, मल्टीपल क्वेश्चन पूछूंगा मल्टीपल तरह से, वो मुझे जवाब देगा, मैं जो जवाब अच्छा लगेगा इसका मैं यूज करूंगा, and the answer that appears most frequently among the diverse reasoning paths generated would be correct one. This approach is consistently used with chain of thought. Chain of thought मैंने क्या बोला है? Step wise. Industry, year, place, and what are the input result क्या आता है, उसका average profit क्या है, वो industry में लगाना है और देखने का. So this is the way we are working. By generating several COD and then selecting the most consistent final answer, that reduces the likelihood of error. Okay? Output configuration and optimization. अब मैं क्या करता हूँ, मैं मुझे क्या आउटपुट चाहिए वो मैं उसका एक फॉर्मेट दे देता हूँ, इसका कंटेंट दे देता हूँ. मुझे जीपी चाहिए, मुझे एनपी चाहिए, मुझे इंडस्ट्री वाइज प्रॉफिट चाहिए, उसका 10 साल का वो चाहिए, उसका मार्केट शेयर कितना है, वो क्या क्या प्रोडक्ट बेचता है. ओके, नाउ आई गिव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट शेयर मार्केट. नाउ ही विल गो एंड मैं इनपुट दूंगा, कहाँ से दूंगा, देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन शेयर मार्केट. नाउ दिस आउटपुट से वो इनपुट क्लिक करेगा, वो डेटा गैदर करेगा, मेरे को देगा, एंड देन ऑप्टिमाइज चेन ऑफ थॉट एंड एवरीथिंग. आउटपुट ऑप्टिमाइजेशन मुझे मॉडल करेगा. आर यू गेटिंग द वे वी आर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट? अब मैं एक एक एग्जांपल देता हूँ. पहले हम चेस गेम खेलते थे. चेस गेम वाज गिवन, चेस का एक बोर्ड होता है, डिफरेंट वो होता है. पहले हम खुद उसको सब स्टेप देते, अब ऐसा नहीं करते. You just play 15-20 games in chess. Right? He will do it on his own. Now, AI doesn't mean you have to give step wise. पहले पूरा फॉर्मेट होता था, आप AI को सिखाते थे. ओके, अब इसको ये भी बोलने की जरूरत, ये घोड़ा है, गाड़ी है, ये राजा है, वजीर है, वो ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है. You just define AI, just whether black, white, this can only one move, and then once you learn every module, आप खाली 20-30 गेम खोलोगे, इसको अपने आप. दिस इज कॉल्ड आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन. Output optimization involves heading and redefining the whole information. Now, only thing you need to decide what you want, what are the data, what are the process, this result would come on its own. जैसे अभी क्रिकेट भी खेलते हो, तो अगर आपको पता है कि the way our women team has come out, every time they have gone to AI, ये दीप्ति शर्मा को ले आओ, इसको ले आओ, then they are using their brain, but before that they have got a lot of information available. ये खिलाड़ी है, उसको यही बॉल डाल. AI is there, there are application of mind, there are so many parameters. किसको क्या गेम डालना है, इसके लिए पिच चाहिए, कौन सा खिलाड़ी कहाँ रखना चाहिए, कब कौन से यूज करना चाहिए, एवरीथिंग इज प्रीडिफाइंड. अगर उस टाइम क्या होता है, देन प्रैक्टिकली क्या होता है कि द प्लेयर इज विथ अ डिफरेंट माइंडसेट. डिफरेंट माइंडसेट कैसे होता है कि नाउ अब इनकी टीम जीत में होती है तो शी प्लेस डिफरेंटली. अब उसको वो उसके दिमाग में कुछ और है, तो एआई वुड यूज डिफरेंटली एंड देन यूज इट लाइक दिस. को कॉल ड्राफ्टिंग इफेक्ट. ड्राफ्टिंग मींस यू आर यूजिंग एआई with your own brain, what exactly at that moment of time you do. This is called traffic effect of AI. जब हमने वुमेन वर्ल्ड कप जीता तो हमने पूरा जो भी सिलेक्ट किया था वो तो पूरा पढ़ के किया था, एआई का पूरा यूज किया था.
Now at the end of the day, you realize that this woman is not playing, she's injured, let her drink. This is called acting AI structure. Be specific, provide contact, define the result output, clear constraint. मोदी साहब ने अभी एक लेक्चर दिया था जो मैंने यहाँ जिक्र किया है, वो लेक्चर भी आपको सुनने चाहिए। मोदी साहब क्या एआई के बारे में जानते हैं, इनको क्या चाहिए। एंड आई टेल यू, इलॉन मस्क कैसे यूज करता है, माइक्रोसॉफ्ट कैसे यूज करता है, नाउ चाइना कैसे यूज करता है। अगर हम इसका किसी का कॉपी करेंगे तो भी हम आगे आ जाएंगे। Creating, extracting, be specific, provide context and define the desired output format message. तो हाँ, clear objective आपको क्या चाहिए, and give the role it specific. Role means क्या होता है, कोई विलन होता है, कोई हीरो होता है, जैसे कोई ह्यूमन एचआर मैनेजर होता है, कोई प्रोडक्शन मैनेजर होता है। तो स्पेसिफिक, दिस इज प्रोडक्शन मैनेजर, दिस इज एन पर्सन लाइक दिस, ही इज सीईओ, ही इज सीएफओ। अब जब वो रोल मॉडल करेंगे तो इसके हिसाब से आपको रोल, आपकी कंपनी क्या है उस तरह से वो AI आपको बताएगा। यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू रीट्रेन, आपको बार बार देना पड़ेगा। रिफाइन योर प्रॉम्प्ट विद इज क्राफ्टिंग इफेक्टिवनेस। आप AI का हमारा क्लास अटेंड करोगे तो आपको काफी चीजें डिफरेंट मिलेगी। यू विल बी हैविंग अ डिफरेंट आइडिया हाउ टू यूज दिस AI, हाउ टू यूज इट। आई एम गोइंग टू गिव प्लेटफॉर्म, यहाँ जाके यूज करो, इस तरह से यूज करो। पता नहीं अभी कहाँ जाना, तो खाली चैट जीपीटी, दो चीज, जेमिनी, तीन चार चीजें मालूम है आपको, फ्री मालूम है, बट फ्री में कौन सा है वो भी मालूम नहीं है। I'll give that in the class. System, contextual and role problem. Okay, मैंने आपको बताया सिस्टम क्या होता है। सिस्टम मीन्स प्लेटफॉर्म, पैरामीटर दिया होता है। तो रोल मैंने बोला कौन सा बोला है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, जैसे मैंने बताया वो एग्जांपल दिया, दीप्ति शर्मा को लाए, कौन सा ग्राउंड है, इज कॉन्टेक्चुअल। सिस्टम क्या एटमोस्फियर है, क्या वो है, वो कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको डालना पड़ेगा। दिस इज लाइक सिस्टम है, रोल डिफाइन है, बट कॉन्टेक्चुअल है। कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन इज मोर मटेरियल देन कंटेंट। कंटेंट तो कुछ भी है, आपको बढ़िया चाहिए। ओके, क्लियर। वो एक वॉच आती है, एक क्या बोल राडो की आती है, आपको कहाँ बेचना, कैसे बेचना, कितने अमाउंट में बेचना, दिस आर कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन। यू वांट टू सेल वेयर, यूएसए, यूएसए में कौन सी स्टेट, कौन से कंट्री, कौन सी सिटी, कौन सा एरिया। अब आपको पता चलेगा ये घड़ियाल की दुकान मुझे कहाँ खेलनी है, कहाँ रखनी है। मेरे को अरविंद की शॉप में जाके कोई जगह पे राजस्थान में कहीं कोई जगह पे गांव में रख दूंगा, नहीं चलेगा। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट आई एम, अगर मैं राजस्थान में खोलूंगा तो राजस्थान के लोग क्या खरीदते हैं वो सोच के मुझे दुकान में माल रखना पड़ेगा। कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन, everything is predefined. Now this is the time, it's quite different. It's absolutely awareness game. Now अभी क्या होगा, बिफोर एआई आप काफी जॉबें निकल जाएगी। मैं आपको मेरा क्लाइंट की बात करता हूँ। मेरा एक क्लाइंट है, which is, वो पहले इसके पास 40 आदमी थे, वो साइबर सिक्योरिटी का काम करता है, पर अभी वो बोलते मेरे को 35 आदमी को निकाल दिया, क्योंकि माई मोस्ट ऑफ द वर्क विच आई वाज डूइंग manually, now computer is doing, because AI is defined. So these are the way they are developing on their own contextual model. So this is called contextual prompt. Self-consistent. Self-consistent and react, both are prompting. It is used to improve the accuracy and reliability of a large-scale model. Self-consistency involves generating multiple reasoning paths for same prompt, selecting the answer that appear most frequently. अब आप उसको बार बार पूछते हो, जो जो आपको सही लगता है यूज करते हो। नाउ रिएक्ट एंड एक्शन, नाउ यू चेंजिंग द होल कंसिस्टेंसी पार्ट एंड इम्प्रूव द रीजनिंग। नाउ वी आर गोइंग इनटू, अगर आपको एक एआई मॉड्यूल बन गया, एआई आपके पास है, नाउ यू नीड टू हैव द कौन सा डेट। मैंने आपको बताया कि मैं अभी क्या बोलता है, डेटा टैगिंग के बारे में बताया कि हम एक्सरे है, एक्सरे से हम एमआरआई एक्सरे करके हम रिजल्ट देते हैं। तो दिस इज वर्क ऑन, ये जो एक्सरे से लोगों की फिजिकल हेल्थ पे डिपेंड करता है। तो एवरी डेटा क्वालिटी, मैंने जो एक्सरे दिया उसके ऊपर से क्या डिसीज है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। क्वालिटी, आई हैव टू चेक इट ट्वाइस, थ्राइस, टू सी दैट इट इज अ क्वालिटी इंफॉर्मेशन। अगर मैंने गलत
कोई एक्सरे पे मैंने गलत टैगिंग कर दिया तो उसका रिजल्ट भी गलत आएगा। तो इसके लिए मुझे डेटा की एक्यूरेसी बार बार चेक करनी पड़ेगी। इट डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन विच आई एम यूजिंग इट। जैसे अभी नाउ वी हैव गॉट अ डेटा ऑन लाइक हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया with the use of this USA. Now that gives a lot of information about so many information. Now ये जो जमीन के अंदर नीचे कितना क्या होता है उसकी इंफॉर्मेशन हमने एक कोलाबोरेशन में यूएस साथ में किया है। वो इंफॉर्मेशन को डेटा ट्रैक करना पड़ेगा, उसके ऊपर से हम देगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन देगा हमको कहाँ डिग करना, क्या करना, उसकी क्वालिटी हमको चेक करनी पड़ेगी। इसको एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। Establish the government, implement the data governance, secure the data pipeline, protect data pipeline environment through encryption. ये जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंक्रिप्ट करना रखना पड़ेगा। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हेन दिस इज लाइक मैंने जो बताया है वो एमआरआई के बारे एक्सरे के बारे में बताया, देयर आर डिफरेंट थिंग्स। तो ये आपको सिक्योर पे रखना पड़ेगा। अगर आपको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दे दिया तो इट वुड बी इन अ डीप ट्रबल। जैसे जैसे पेस मेकर होता है, पेस मेकर मालूम है, पेस मेकर इज कंट्रोलिंग योर हार्ट बीट। नाउ पीपल कैन मैनिपुलेट पेस मेकर टू मेक यू डेड। तो आपको इसको एनक्रिप्ट करना पड़ेगा, इसको सिक्योर करना पड़ेगा। यू कैन नॉट इवन फैथम इट। वो पेस मेकर में कोई जाके इसका सॉफ्टवेयर में जाके चेंज करे तो जो आदमी है वो मर भी सकता है, because pacemaker is connected with some other data on the basis of which he gives a feedback. So there has to be security. The more the value, more you need to have a best practice available to it. So you need to need to know basis the best practices. So this is what we are going to conduct there. Best practice reliable have to include data, strong data governance, continuous monitoring, robust security management. Other key practices involve ethical consideration. Suppose अभी एक AI का format आया था, so like there is a framework in USA and there is a framework in USA for self-driving car. तो उन्होंने लॉ बनाया, यूएसए में लॉ बनाया कि किसी को एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। चाइना में लॉ बनाया कि the accident probability when you are using AI as a driver, आपका जो इंडिविजुअल ड्राइव करते हैं उससे कम है तो उसको एक्सीडेंट होने दो। So you cannot have a perfection in life. This is the difference between the moral and the base of grace. Okay, are you getting it? Clear? Yes, now. अब आप कार के ड्राइव करते हो, कार भी AI, तो AI को क्या इंफॉर्मेशन देते हैं वो मैं बताऊं। एक मैडम है 70 years लेडी, 80 years लेडी, वो वो ट्रॉली लेके मॉल से बाहर निकल गई और एक लड़का गलती से चलते चलते बाहर दौड़ता है। तो एआई को ये भी इंफॉर्मेशन देती है कि यू चूज दिस 80 years lady for an accident rather than the 2 years boy. This is all the information which is given to AI. Now this is the bit. Getting it? This is the called AI. AI doesn't have a full system. आप गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा ऐसा नहीं, बट इट इज far lesser than a man doing that. So this is called best practices available. It's absolutely like AI does, like robot सर्जरी करता है, हार्ट में जाता है सर्जरी करता है, and man, the person who is a doctor is just seeing it. He just see the program. So now when it comes to a level should be quite different. So this is what is now I'm going to talk about agentic tool, AI tool. Agentic AI tools, there are 3 different kind of agentic tools. Agentic tools are software platform framework unable to have autonomous, capable, independent planning, decision making, and action to operate. Agentic AI tool क्या होता है वो, जैसे एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जो मैंने आपको बताया। एग्नेटिक AI टूल्स का ये प्रकार है। Spark AI, comprehensive suite, AI power calling system, deep research capability, autonomous, multi-agent. This is one due to class. This is only one module I have discussed right now. But बाकी module है AI business consulting,
Model 3, Gemini AI, Google AI Studio, Notebook LM, up for the advanced agentic AI tools. GenSpec AI compressor to deep research capability, multi-agent integration, AI-powered calling system, autonomous private project, the business application, sales data analysis. पहले आप एक बार सोच लो कि आपका जो काम जो रोज जो आप MIS बनाते थे पहले, तो MIS के लिए काफी लोग यहाँ से यहाँ जाता है चेक करते थे, अब वो करने की जरूरत नहीं, जस्ट प्रॉम्प्ट आप आपका इनपुट दे दो, आउटपुट दे दो, प्रोसेस दे दो, देन रिजल्ट वुड बी प्रोड्यूस। आप एक दो बार चेक कर लो डेटा, आपको आप इनपुट देते हो तो आपका आउटपुट काफी चीज पहले आपका इनपुट आउट का प्रोसेस फिक्स कर दो, उसका रिजल्ट देखो, प्रोसेस फिक्स कर दो, आप 5-6 बार चेक कर लो, अगर चेक करने के बाद आपको इनपुट ही देनी है आउटपुट अपने अपने। It's called practical business application. I tell you, because of that, there are any number of data. का कौन सा अरविंद का शर्ट कहाँ से बिकता है, लोगों को कौन सा कलर का कलर पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, कौन सा टेक्सचर पसंद है, कौन सी बिजनेस की स्टाइल पसंद है, कितने साइज का बिकता है, किसको ये पसंद है, कौन सी जगह पे है, ये सब इंफॉर्मेशन अगर जाएगी तो वी आर एबल टू यूज। पहले तो सेप में डेटा बहुत होता था, बट वी डोंट नो हाउ टू यूज इट नाउ, टाइम टू कम। अभी अभी आप ये जो वॉर होती है, लाइक देयर इज अ वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड दिस, we have a specific cell in India by Defense Department, PMO department, to use same in our in our in our क्या बोलते हैं, in our military science to do. Once they decide, they send it to the DFO, Defense Intelligence. They send it to ISRO. We want this research. We want this equipment. They go and information. ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं, ये फ्रांस के पास है, ये इसके पास है. How we are going to use this? All business application और a product. पहले जो जमाने में जो वॉर होती थी वो अभी नहीं होती. जैसे वी आर डीलिंग विद ट्रम्प फॉर टैरिफ वॉर, तो टैरिफ का नेगोशिएशन के टाइम देयर आर एनी नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन यू नेवर नो, नॉट लाइक दैट. अगर आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यू नो देयर इज एन इलेक्शन गोइंग इन बिहार, देयर आर पीपल using FB, Twitter, LinkedIn, number of social media, print media, everything. And BJP, Congress knows what to tell what. This is called AI. AI के बेस पे ये लोग पूछते हैं. अभी मोदी साहब ने 10,000 का वो बनाया, 10,000 given to every woman for the purpose of election. तो हमारा राहुल गांधी साहब ने बोला हम 30,000 देंगे. This is the way the election is in life. You have to be basically use AI. AI यूज नहीं करोगे तो इलेक्शन की तो बात छोड़ो, हमें भी नहीं कर सकते. AI in the marketing, free all resources, cost optimization. These are different models available. Ethical AI, vibe coding and agent killer. We have a methodological interactive workshop. अब जो भी करोगे, you will be Zoom पे भी join करोगे, we would listen to you. There would be one-to-one call. We would be having a batch of 15 to 20 sites. And we would teach you to say that your interactive session, step-by-step learning, ongoing support, privacy-focused training, customized content, real-world cases, actual life cases हम लेंगे. Cost reduction, data-driven decisions, staff development, efficiency gain, future profit, operation growth, immediate result. This is what we are doing. Now we are going to talk. These are the free version. DeepSeek क्या है, Ideogram क्या है, Light PDF क्या है, Google Slide क्या है, आपको ये सब खाली नाम कभी सुना ही नहीं है. I'm talking about 99.9%, 0.1%. ChatGPT पे करके क्या करना? Midjourney, Hippo, PowerPoint, Runway, Grammarly, Canva, Zapier. I'll tell you how to use it. These are the Google which are free, available there.
This PPT I'm putting it before you also. And these are the way you use it, different tools, free AI tools available from Google only. Three ways to AI agent. AI means prompt. Non-agentic means there are free available this. Non-agentic means you're using, making it for your own input output process. आपको सबको एक एक के साथ लिंक करना है. मैं ये सब आपको बोल सकता हूँ एक एक करके, but this is not my main purpose of this. And this is the way AI agent work: environment, perception, cognition, model, memory. You know, you're getting prompt and you're getting result. Because once you attend the seminar, you would have a different way of looking. Before AI tool, एक ये लड़का है, 10 टूल पहले नहीं था, अभी यूज करता है. Now he is delighted to work with computer. ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है. 2021 में AI जनरेटेड कम्युनिकेशन कितने थे? तो 0. Now in 2025, change the scenario. This is right human written content. Now अभी आप AI नहीं सीखोगे तो गए काम से. Now AI tools available in market. Chatbot कितने हैं, productivity कितना है, design कितना है, video कितना है, marketing कितना है, writing कितना है. We will talk about all these and how to use it. This is what we are going to discuss here in the forum. ये हमारा मोदी साहब का एक लेक्चर है और you go online, मैंने ये लिखा है. आप ये डिजिटल स्क्रिप्ट करके बोलोगे मोदी साहब का 15-20 मिनट का टॉक है. What is the vision from horse's mouth of our 150 crore people's prime minister? So number one, he knows in and out of the line. He is the champion of all ministers in the world, prime minister in the world, whole head of the world. He will tell how to use it. He goes and talks to a woman, how he talks to each other, how he is sure. Number one, this is our artificial intelligence model, technology landscape. ये कैसे इवॉल्व हुआ? तो पहले भी एआई तो था ही, बट काफी चीजें पहले इम्प्रूव होने का एक रीजन था कि हमारे पास जो कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी जो कंप्यूटर की थी वो बढ़ गई. And there are a lot of data is available with that. Because of that, this has increased. पहले मशीन लर्निंग था, डीप लर्निंग था, ये सब कॉन्सेप्ट पहले से था, बट इसका ग्रोथ जो हुआ नाउ, अब 2 साल बाद में सोच नहीं सकते थे. पहले रोबोट था, हमने सोचा रोबोट क्या करेंगे. Now I give you one more example. Like this robot, what robot is going to do for Reliance? Reliance is going to, like आज इन्होंने declare किया कि they are going to have in Kandla, in Kutch, and power project, which would be functional in very short time, 2-3 years time. I put it in one of my slides, and that would increase our production electricity. 10% of India's electricity would be produced by Gujarat after the functioning of the plant, which is over a period of 4 to 5 years. They're going to use robot. रोबोट क्या करेगा? जो आपका सोलर पैनल है, वो सोलर पैनल को डिफाइन करके whole function would be done by. They have built a robot, train robot, use it, and robot will be done all the dollar. So this is AI functioning with robot. My daughter is working in abroad, and she is working in Toronto. She is saying that इनका जो माल लिफ्ट करके जो होता है वो रोबोट के थ्रू, कितना माल है क्या है. सो इंडिया में थोड़ा कम है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल कम. आपको जो वेट लिफ्टिंग कैसे ऊपर करना नीचे करना, ये दिस विल बी डन बाय रोबोटिक. एंड जो हमारी जो मेट्रो ट्रेन चलती है वो रोबोटिक. वी आर नॉट सो मच फन. दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज द चार्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट. दिस इज 20 प्रॉम्प्ट. इतने सारे प्रॉम्प्ट बार बार यूज होते हैं. 20 chat GPT prompts. This is a concept of machine learning क्या. तो ये आपको लगता है एकेडमिक है, बट ये एकेडमिक नहीं है. कि मशीन लर्निंग जो एआई कहाँ से हुआ?
तो मशीन लर्निंग का क्या पार्ट है? सुपरवाइज लर्निंग। वो अपने आप हम पढ़ाते हैं, वो पढ़ता है। दूसरा अनसुपरवाइज लर्निंग, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या होता है? एक आप एक तुमका बना दे तो उसके हिसाब से दो। अब जो सुपरवाइज लर्निंग, उसका दो पार्ट है, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। सुपरवाइज आउटपुट नो, रिग्रेशन का क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। ये मैंने एक छोटा सा मशीन लर्निंग, हाउ मशीन लर्निंग has become a function of AI, because there are different because मैंने ये सब ग्रोथ कैसे हुआ, क्योंकि कंप्यूटर हैज बिकम वेरी, जो चिप है, कंप्यूटर की चिप हैज बिकम वेरी वेरी पावरफुल। पहले मैं जब यूज करता था, मेरे पास जो कंप्यूटर था, इससे ज्यादा आज मेरा मोबाइल का रैम और ये हो जाता। तो दैट इज द वे। ये जेमिनी से फोटो का कैसे वो करते हैं, वो मैंने दिखाया है कि कैसे इसका एक एक करके देते हैं। दिस आर द सेस। So this I'm coming to the end of the session. ये मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का एक पीपीटी में, मैं इसका मैं लेक्चर में कर लूंगा। जो आप ये हमारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में क्यों आओगे, आपको क्या फायदा होगा। टुडे आई हैव टॉक्ड अबाउट एआई, व्हाई यू जॉइन एआई। दिस इज व्हाट आई टॉक्ड अबाउट। दिस इज द प्लेस यू जॉइन थ्रू nitin.blogspot.com। इसमें एक आपका फॉर्म होगा, गूगल फॉर्म भरोगे, बाद में आपको लिंक मिलेगा 6,000 प्लस जीएसटी starting from 13th. We are going to conduct on 8th GST seminar. This is Nitin Pathak, blogspot.com. We are also having article which I already covered. These are PPT in YouTube. I already presented before you. Just join this CST CMA, जिसी को article shoot करना है वो मेरे पास आ जाए. I would love to. I'll assure you, you join it. With this, I'm coming to a conclusion. Join with this workshop, and you'll be 100% benefited by this. Thank you very much. We are closing this session right now.